Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhaib Beg and welcome back to my channel, Zuhaib Beg channel. So today I'm going to explain the next national parks of Pakistan. As you know, we have already discussed many different national parks of Pakistan. For example, the number of national parks that was discussed earlier in the previous lectures. What do you know about national park? National park is an area with outstanding scenic merit where the landscape, flora, fauna are protected under the natural habitat, and there are some prohibition or some rules that are followed by the visitors and the other peoples that move toward these national parks. So that the number of national parks in Pakistan, as we have already explained, there are total 29 national parks in Pakistan, and there are different prohibited acts. The फर्स्ट नेशनल पार्क जो थी वो 1870s में प्रॉपरली जो है वो बनी थी और 1874 में इसको प्रॉपरली अनाउंस किया गया था. हिंगोल नेशनल पार्क हमने इससे पहले डिस्कस किया. हिंगोल नेशनल पार्क के बाद सेकंड वन जो था वो हमने कीर्तन नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा. कीर्तन नेशनल पार्क क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है पाकिस्तान की. देन उसके बाद जो है हमने थर्ड नेशनल पार्क जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था about the Lal Sohana National Park in the Bhavalpur region. Next one जो है next to the Bhavalpur region, we move toward the Yubia National Park जो कि हमने एबटाबाद के अंदर डिस्कस किया. यूबिया नेशनल पार्क जो है और मरी हिल्स के साथ प्लस खुजराब नेशनल पार्क, कराक्रम हाईवे, डॉक्टर शेलर की बहुत बड़ी एक काविश थी. इसके बाद हमने डिस्कस किया था Chitral Gold National Park in Chitral. So the next one was the Hazarganji Chiltan National Park, and from Hazarganji Chiltan National Park, we discuss the Margla Hills National Parks. So these are the multiple national parks that we have already discussed. So today I am explaining the next national park. It is a Chinji National Park or Chinji National Park. दो तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है. चिंजी नेशनल पार्क जो है it is spread over 6095 hectares and it was established in 1987. 1987 में ये एस्टेब्लिश हुई और ये इसकी लोकेशन जो है वो साल्ट रेंज नियर तलागंग डिस्ट्रिक्ट चकवाल इन पंजाब के अंदर है. और तलागंग जो है चकवाल का रीजन जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है और बहुत ज़्यादा साल्ट रेंज है और एक अच्छा प्लेचू है. सो इट इज़ अबाउट 130 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद. इस्लामाबाद से अगर 130 किलोमीटर मूव करें तो ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये नेशनल पार्क जिसका नाम हमने अभी लिया चिंजी नेशनल पार्क. So about what is about topography? That is the stratigraphical distribution and vegetation. The park exhibits the biome of desert and xeric shrubland. That means ज़्यादातर bushes हैं. जैसे कि आप देखिए यहाँ पर साल्ट रेंज नज़र आ रही होगी आपको और ये साल्ट रेंज में रेड कलर जो है वो प्रोमिनेंट होगा. रेडनेस जो है ये खास पहचान है यहाँ पे तलागन की जो पहाड़ी हैं. और प्लस ये these are the shrubs that grow here. These are the shrubland. This one is a shrubland. So the area is characterized by subtropical vegetation, the deeply eroded land of Chinji with the igneous rocks. ये igneous rock की बहुत बड़ा रीजन है. और याद रखिएगा कि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फॉसिल्स रिकॉर्ड एक लार्ज नंबर में, ह्यूज नंबर में जो पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं वो इस इलाके का विजिट करते हैं और यहाँ से बहुत सारी फॉसिल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से फाइंड आउट करते हैं. सो अट्रैक्टिव साइट द पार्क इंक्लूड द एरिया ऑफ स्वान रिवर एंड स्वान वैली. ये जो है स्वान रिवर और स्वान वैली का एरिया है. अ लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल्स कलेक्शन एरिया विद एन एलिवेशन ऑफ 2231 फीट. ये इतनी पीक्स पे हैं और पीक्स के अलावा ये जो है इस इलाके में ये दो चीज़ें स्वान रिवर और स्वान वैली ये काफ़ी पॉपुलर है. पार्क इज फेंस्ड बाय 1.6 हाई वायर नेटिंग. इसको फेंसिंग की गई है प्रॉपरली ताकि इसको कवर कर दिया जाए इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए चिंजी नेशनल पार्क की. द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट प्राइमरली प्रोटेक्टेड स्पीशीज दैट इज द पंजाब उड़ियाल. दिस वन इज अ उड़ियाल. उड़ियाल जो है ये एक पंजाब उड़ियाल जो है वो खास तौर पे चकवाल में बहुत ज़्यादा है. और बर्ड्स की स्पीशीज देख लें तो ग्रे फ्रैंकुलिन जिसे ग्रे पार्ट्रिज भी बोलते हैं. सो दिस वन इज द ग्रे पार्ट्रिज and here is the common wood pigeon. This is the common wood pigeon. So these are this is the primarily protected species and some most common birds that you can see here. So the next one is about mammals. What about the mammal? Porcupine जो है वो सही यहाँ पे है. चिंकारा हिरन जो है, वाइल्ड बोर है यहाँ पे, सिविट कैट्स है, वाइल्ड हेयर जंगली खरगोश जिसे बोलते हैं ये यहाँ पे मौजूद है.
with large size of ears than the domestic rabbits. So mongoose जो हैं, नेबले यहाँ पे है, gazelle, gazala, gazala, Indian pangolins हैं, Indian wolf हैं, और golden jackal. These are the golden jackal that you can see here in this national park, Chinji National Park. So next, what is about next? The next is the second last national park of Pakistan. It is known as the Machiara National Park. Machiara National Park ये जो है 33,437 एकड़ से मुश्तमिल फैला हुआ ये एक रकबा है, और ये नेशनल पार्क 1996 के अंदर, यानी चिंजी नेशनल पार्क से 1 साल पहले की बात है, जब मशेरा नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर हुई. इट इज़ लोकेटेड इन मुजफ्फराबाद. लोकेशन जो है नेक्स्ट पे देखें तो मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों के करीब, खास तौर पर मुजफ्फराबाद की पहाड़ियों का एक बड़ा इलाका जो है वो सराउंड करता है इस मचेरा नेशनल पार्क को. नीलम वैली ऑन इट्स ईस्टर्न साइड, जो इसके मशरिक है, वहाँ पर नीलम वैली है, और कागान वैली जो है वो इसकी वेस्टर्न साइड, मगरिब की साइड पे. सो इसी की बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फलक वो जो है फलक बोस हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और प्लस ये बहुत पाइन्स के ट्रीज हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, कोनीफर्स वगैरह. So, topography and vegetation, it consists of mountain mixed broadleaf coniferous forest. Coniferous forest आता cones bearing जो forest होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा numbers में. Attractive sites, few attractive sites हैं breeding population, western tragopan pheasants. This one is a bird, और ये बड़ा खूबसूरत सा परिंदा है. इसके ऊपर जो है रेड कलर और ब्लू कलर की इसकी नेक होती है, वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट ब्राउन स्पॉट्स हैं. ये आ जाते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपैन फीजेंट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है. Tragopan with its brilliant red neck and black and white speckled plumage. So this one is a characteristic of this tragopan. Pheasants also have scientific value for environmentalists and ecologists, but it is an verge of extinction. मतलब बड़ी तेजी से ये खत्म हो रही है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड फीजेंट एसोसिएशन जो है उसने एक प्रॉपर जो है वो काफ़ी कोशिश की ताकि ये स्पीशीज जो है ट्रैगोपैन की स्पीशी को बचाया जाए. और इसी फीजेंट्स कंट्रोल एसोसिएशन के साथ और बहुत सारी एसोसिएशन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मिल के काम किया ताकि किसी तरह से इस एक्सटिंक्ट होने के करीब की इस इंडेंजर्ड स्पीशी को जल्द से जल्द बचा लिया जाए, सेव कर लिया जाए. मचेरा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द 3 globally significant national parks selected for a global environmental facilities. So इसकी environmental location इतनी ज़्यादा फ्रेश एयर जो है वो बहुत abundantly present है. So इस वजह से इसको select किया गया है पाकिस्तान के अंदर इसको सेव करने के हवाले से. Reptiles like Indian cobras, saw-scale vipers, wolf snake, this is a wolf snake, और ये ब्राउनिश वाइट कलर का होता है. लोअर जो इसकी बैक होती है, बेली होती है, वो वाइट कलर होती है, ऊपर से डार्क ब्राउन कलर होता है, और देयर आर some strips of white color strips are also present. So it is a wolf snake. Russell vipers जो है यहाँ पे मौजूद हैं. A monitor lizard. So this is a monitor lizard, and once upon this lizard it was called as and now it's also called as the largest lizard on the surface of that monitor lizard. So next one is about birds, and the birds Western tragopan pheasant. This is the Western tragopan pheasant. So red colored neck with the very spectacle white colored and white colored spots and on the surface of the black feathers. So cheer pheasant, this is a cheer pheasant, and the European monal, peregrine falcons, Egyptian vultures, green black tit, this is a green black tit, and hen harriers हैं, like this hen harrier, and the कोकलास pheasants हैं, वो यहाँ पर bird species है. इस मचेरा नेशनल पार्क में मैमल्स हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स हैं. So look this huge mammal or snow leopard. And the next one is a common leopard, Panthera pardus, also present here. So the next one is a wolf, musk deer. Musk deer, it is very important kind of deer whose pod is very highly precious because it is used in the fragrance in the different kind of perfumes. So मस्ट डियर इसकी पॉट से वो जो है उसमें से थैली निकलती है, और उस थैली को हम जो है वो परफ्यूम्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्रेगनेंस के तौर पे. सो मंकीज यहाँ पर मौजूद हैं, लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, हेज होग, ब्लैक बेयर, मरमोट्स, इवन द ग्रे लंगूर. दिस इज अ ग्रे लंगूर. हे मॉम प्लीज कैच मी and please save me. So this kind of gray langur, I think the young baby
want to protect himself from the human beings, because humans, yes, what do you say, humans is a great creature. Marmots हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं. So this is about the marmots. The next one is about Deosai National Park. The last national park of your syllabus is the Deosai National Park. It spreads over an area of 3,000 square kilometer at an altitude of 13,500 feet पे मौजूद ये national park है. It is one of the one of the you can say that highest plateau in the world. So Deosai or Devasai, देव दिवस है, और उस वजह से ये कहते हैं, आगे चल के देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है. Why this one is also called as Devasai. So the land of giant plains are among the highest plateau in the world. Location Astor district, district Gilgit-Baltistan. So the highland was named for famous legend described by the Gujars. वहाँ पर जो tribes हैं वो गुजर्स कहलाते हैं, जो बेर बकरियाँ रखते हैं और वो मुख्तलिफ सीजन में यहाँ पे रहते हैं, फिर वहाँ से वैलीज, मुख्तलिफ वैलीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कुछ देर यहाँ पर गुजारने के बाद. तो गुजर्स का कहना है कि एक फेबल है, मतलब एक कहानी है कि बहुत सालों पहले एक जाइंट यहाँ पे रहता था, एक द्योर यहाँ पे रहता था, जिन रहता था, जिन, और who lived there and grow all needed crops for himself on this widespread area. वो वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो क्रॉप्स ग्रो करता था, जो उसकी अपनी जरूरत होती थी वो खाता था. पता नहीं अब ये कितने सच है, ये मिथ है बेसिकली. सो द टोपोग्राफी और वेजिटेशन, हाफ अ ईयर बिटवीन नवंबर एंड मई देओसाई इज स्नो बोर्न. यानी नवंबर से लेके मई तक जो है तकरीबन जो है वो स्नो कवर्ड इसकी पीक्स रहती हैं और आइस कैप्स बनी रहती हैं. सो बट इन समर केसेस जो है वो देओसाई में आप इजी टू असेस होती है, वहां पर आप मूव कर सकते हो, और accessible from the स्कर्दू in the north स्कर्दू से अगर आना हो तो नॉर्थ वाली साइड पे स्कर्दू है, और उसके बाद सोर वैली जो है उसके मगरी वाली साइड पे. इन अगस्त इट इज द होम टू सम ऑफ द मोस्ट कलरफुल फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन फ्लोरा प्लांट्स जो हैं, हर्ब्स खास तौर पे यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं. सो मोस्टली इट इज अ ग्रेट साइट ऑफ प्लेन्स एंड ग्रास कवर्ड माउंटेन्स without shrubs and trees. No trees, no shrubs. That doesn't mean there is not a presence of trees. Some very small amount trees are also visible here. So this one is about the Deosai. Attractive places, attractive site, attractive reasons. So spring comes in August when millions of wildflowers begin to bloom all over the green grassland, lush green grassland. So this is the time. ये एक ऐसा टाइम है जब ये एक पैराडाइज लगता है, एक जन्नत से कम नहीं है, और इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स, ग्रीन रोलिंग हिल्स हैं नज़र आ रही होती हैं, रोलिंग ग्रीन हिल्स हैं जिन पे ग्रास ग्रो किया होता है, क्रिस्टल क्लियर वाटर यहाँ पे नज़र आ रहा होता है स्ट्रीम्स के अंदर, देन स्नो कैप्ड आइस पीक्स होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड फ्रेश एयर, प्योरेस्ट एयर यहाँ पर आपको मिल सकती है. सो दैट्स व्हाई these are it creates the natural beauty of this area. This plain is dotted with edelweiss. In the Alps it is protected flower. So this is a protective flower और इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है edelweiss को. Importance जो है, Deosai plains make up one of the last frontier of natural habitat for the Himalayan brown bear. ये फ्रंटियर रीजन में हिमालयन ब्राउन बियर की सबसे प्रोटेक्टेड साइड यही है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राउन बियर यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं. ऑलमोस्ट अभी 20 से तकरीबन 28 के करीब जो है ब्राउन बियर यहाँ पर काउंट किए गए हैं कि जो यहाँ पर मौजूद है इस देओसाई नेशनल पार्क में, और इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे खतरात हैं. द नंबर ऑफ थ्रेट्स टू बियर पॉपुलेशन, विच काइंड ऑफ थ्रेट्स दैट आर फेसिंग बाय दीज ब्राउन बियर्स, faced by these brown bears. So the poaching of young cubs, जो young cubs हैं उनको उठा लेना, वो because वो वहाँ पे जो है मदारी आते हैं और उनको then वो जिप्सी जो है वो आते हैं और उनको कैप्चर करते हैं just to tame and train for different arts. Like उसको आपने देखा होगा कि डुगडुगी वाला होता है और बंदर और रीछ लेके आता है, तो अक्सर जो है वो रीछ को सिखाते हैं और देन उस रीछ से करतब करवाते हैं. तो इनसे बचाना होगा जिप्सी से, जितने भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे. हंटिंग ऑफ बियर फॉर इट्स स्किन, स्किन खास तौर पे उसकी फैट्स, उसकी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उस पर्पस के लिए भी उसको हंट किया जाता है. क्लाइमेटिक थ्रेट्स है नंबर 4 पे, कि ये भी थ्रेट्स हैं जो फेस करते हैं ये ब्राउन बियर, बट अमूमन क्लाइमेटिक जो थ्रेट्स होते हैं उनको फेस कर लेते हैं. बाकी जो थ्रेट्स हैं वो बड़े ही जो हैं वो आप कह सकते हैं कि हाईली रिस्क पे है ब्राउन बियर की स्पीशी अगर इसको सेव ना किया गया. लोकल क्वैक्स एक लोकल थिंकिंग है कि जो इसकी ब्राउन बियर की फैट है वो वायरलिटी इन्हांस करती है. सो वायरलिटी इन्हांस जो मेडिसिन हैं उस हवाले से भी कहते हैं कि उसको जो मतलब
आप कह सकते हैं नेचुरल मेडिसिन हैं, उनके अंदर भी उसको ऐड करके यूज कर रहे हैं लोग वहाँ पे, तो इस वजह से इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट द स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन. क्या आया कि कोई स्टेप्स उठाए गए हैं इसकी कंजर्व करने के लिए? तो सबसे पहले इंडेंजर टू कंजर्व दिस इंडेंजर स्पीशी ऑफ बेयर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, दिस पार्क वाज एस्टैब्लिश. ये पार्क बनाई ही इसलिए गई थी ताकि ब्राउन बियर को प्रोटेक्ट किया था. और एक रिसर्च प्रोडक्ट्स है हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, नंबर वन हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, नॉर्दर्न एरिया फॉरेस्ट पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट. ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलके इस ब्राउन बियर को यहाँ पर सेव करें देवसाई प्लेन्स के ऊपर. सो देयर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर शोन बाय these this Deosai नेशनल पार्क. फॉर एग्जांपल ये ब्राउन बियर है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इख्तियार किए हुए. नंबर वन, विंटर डॉर्मेंसी, विंटर इनएक्टिविटी. ये ब्राउन बियर हाइबरनेट करते हैं विंटर में और तकरीबन 5 से 7 महीने के लिए ये हाइबरनेट करते हैं. अमूमन नवंबर से लेकर अप्रैल तक इनकी हाइबरनेशन है. देन ब्रीडिंग पीरियड आ जाता है. मेल हमेशा आइसोलेट रहता है, सेपरेट रहता है, सिंगल. और फीमेल्स अमूमन जो है वो यंग वंस के साथ देखी गई है. लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल जो है वो फीमेल के साथ पेयर बनाता है, और पेयर ये 2 वीक के लिए पेयरिंग होती है. दिस मैरिज जस्ट फॉर 2 weeks. सो मच अबाउट द नेक्स्ट वन. It's very amazing because the mating month start from the May to July, और वो mating month होता है. और then gestation period लगभग 180 to 270 days. आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन जो है वो लगभग जो है 6 months to 9 months के करीब जो है वेरी करता है टाइम पीरियड इसका. वो gestation period है. और बेबी कम इनटू द वर्ल्ड फ्रॉम जनवरी टू मार्च, बिकॉज मीटिंग जो है मई से जुलाई हुई है, तो जनवरी से मार्च वो आ जाते हैं. नाउ देयर आर 20 to 28 bears in this Deosai National Park. So what's about the next? Next is about the birds that are present in this Deosai National Park. Golden eagles, ledger falcons, snowcock. This is the amazing bird, beautiful bird. I think so. One of the most beautiful creature of that is created by the Allah. Um, Snowcock and Indian sparrowhawk. Like this is the ledger falcon and griffin vultures. So this is the golden eagle. Next one is about the mammals, and the mammals include snow leopard, brown bear. This is the brown bear that is watching to you. How am I look? So this is about the brown bear, golden marmots. These are the golden marmots that are fighting with each other for something, to eat something, to snatch something from the other marmot. And the musk deer is also present here, like the Machiara National Park. So migratory hamster. This is a migratory hamster, very small, cutest animal or cutest creature. So this is these are some mammals, and some of the other mammals like Ladakh Ghurial and red foxes. So this one is totally about the Deosai National Park. Today I have discussed the 3 national parks. The previous one, that is the Deosai National Park. The first, last one is the Deosai National Park, and the second last was the Machiara National Park. And from the Machiara National Park, the next kind of national park was about what? This one was about the what? Chinji National Park that is present in Talagang. ओके, थैंक यू वेरी मच. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगा. सो सेंचुरी क्या होता है, ये कैसा इलाका होता है, यहाँ पर शिकार अलोक किया जाता है कि नहीं किया जाता? सो दीज आर सम क्वेश्चन that are frequently asked by the different persons. So I will explain in my next lecture. Then until you subscribe my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.